अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्टअप ग्राइंड में फाइनली एक और पॉडकास्ट में वापस आए। पॉडकास्ट एक फिजिकल इवेंट है जिसमें हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हबीब इलाही साहिब, हबीब भाई, who is a very good friend. He has started a very exciting new venture and we're going to talk to him more about that. हबीब भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much. Thanks Saad for having me over. It's my pleasure to be here. वंडरफुल। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आए आज उनका ही बहुत शुक्रिया। तो अभी भाई, we want to get to know more about the company, the VNR, but I want to know a bit more about you first, and then what actually triggered you to start doing it, what are you doing, but like पहले आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? So we are based in Karachi. I never thought that I'd be ending up where I am today, especially this business. And इससे पहले जो journey थी, no one actually really plans how it all starts. So I actually wanted to be in the business of hospitality management. So before university, that was my aim. So starting from that, I did my undergrad in operations management. वो family का एक expectation होती है for you to join your family business. So keeping up with that, I decided to do operations. It was an area of interest. I started my career journey in 2013. I did my undergrad from University of Manchester business school से, and operations से मेरा, because my background was related to operations, I joined a family business looking after the factory. So we basically having a background of plastic and packaging as a family business, and that is where I started my journey. Initially, I was into the flexible packaging business where we used to supply to different FMCGs for their packaging needs. And then I joined our sister concern, so listed company, MacMac Limited, serving as director of operations. And we're making VOPP and CPP films there. And the journey, the background of all the industry और उसके हिसाब से जो needs थी with respect to post-industrial and post-consumer waste, the more you get to know about it, the more you're intrigued कि ये अब इसका होगा क्या. So that's insight of knowing how we generally as a public have a perception कि यार जो plastic manufacture हो रहा है या जो हम use कर रहे हैं, we should all replace that या उसको हम ख़त्म कर देते हैं. So having both sides, that is a general thing we get to hear, and being also part of someone who was related to the industrial side of it. So we thought कि दुनिया में बाकी जगह भी तो सब चीज़ें हो रही हैं. What are the pros and cons? So Pakistan has only 4 kg per capita consumption, which is for single-use plastic. Okay. And Australia has 59 kg per ton. So in terms of our industry is not that mature overall. हमारे अभी भी आपको जो fruits है, vegetables हैं, a lot of general products that you consume are not packaged that way, या हम उस तरह preserve करके नहीं use कर रहे होते, fresh कर रहे होते. The life is not on that fast pace now that obviously is changing in the rural urban areas, but because we are mostly a rural based population, so हमारा in general consumption is and as we see with respect to the economic situation, the consumption will increase. So अभी हम 4 पे हैं, this is what we fear. आगे जाकर खैर से ये बढ़ेगा, तो what will be the impact? We are unable to manage at this point, which is very low. अगर हम इसी को manage नहीं कर पा रहे तो आगे क्या होगा? So there are a lot of fear कि होगा क्या? सिर्फ कुछ जो आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, that's for single use plastic ना, मगर क्या चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? So basically what happens is whatever daily use में we consume, any wrapper, any plastic bottle, what happens to that product? That is the main thing कि उसका होता क्या है. So there's a lot of things. पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ों की recycling हो रही है, which includes PET bottles being one of the largest. It has a very organized recycling setup in Pakistan. A lot of big companies, ICI, Gatron, they are doing it. And cottage industry में तो हो ही गए.
So the thing is, when it's more organized, so there are more resources employed to it, there are better pricing for the collector. हमारे यहाँ जो पूरा एक कचरे का निज़ाम है, that is very important to understand. What happens when you throw an empty wrapper of Kokomo? Where does it go? So that understanding is very important to understand the real problem. अगर आप एक पानी की बॉटल फेंकते ना, that is most likely ending up in recycling centers जहाँ पे वो रिसाइकिल हो रही है और उसकी दोबारा बॉटल बन रही है या उसी पॉलीमर की जो पॉलिएस्टर है उसकी कोई और चीज़ बन रही है. बट दैट इज नॉट हैपनिंग with anything else in plastic to that majority. Plastic bottles are very highly recycled in Pakistan. Reason being, it's very well paid. इस वक्त कचरे में 100 रुपये kg अप्रॉक्स रेट है एक प्लास्टिक बॉटल के पर kg का. सो द कलेक्शन गोज फ्रॉम योर हाउस, आप अपने डस्टबिन में डालते हैं, उसके बाद आपका जो भी एरिया का वेस्ट बिन है उधर जमा होता है. यू वुड सी जंबो बैग्स लेके डिफरेंट कम्युनिटी स्कैवेंजर्स जो हैं उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं. आप देखें काफ़ी सारी अफगानी बच्चे वहाँ पे कलेक्ट कर रहे होते हैं. तो व्हाट दे आर डूइंग, यू वोंट सी देम सेग्रीगेटिंग या कोकोमो का पैकेट या कोई और चिप्स का पैकेट है कुछ. क्यों? बिकॉज उससे उनको कुछ वैल्यू नहीं मिलती. उसमें से लोहा अलग करेगा, उसमें से प्लास्टिक में बॉटल्स कैंस अलग करेगा. एल्यूमिनियम इज़ अ गुड सोर्स, अच्छी पैसे दे देता है. देन गत्ता अलग करेगा. दीज आर ऑल आइटम दैट्स बीइंग वर्कड अपॉन. सो दीज आर रिसाइकल्ड हो रहा है, इसीलिए वो कलेक्ट भी कर रहा है और उसके डिफरेंट ऑन द चेन वो इवेंचुअली टेंड्स अप बीइंग रिसाइकल्ड. सो दैट्स व्हाट दैट लिटिल बच्चा इज गोइंग, जो हम देख रहे होते हैं और साइकिल पे लेके घूम रहा होता है, वो उसका पूरी चेन है. इट गोज टू कलेक्टर्स एंड देन ऑनवर्ड्स एंड चलता रहता है. बट देन वी सॉ कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट बीइंग डन. सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग. वी सॉ वैकेंसी कि यार ये काम नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज एंडिंग अप इन द लैंडफिल्स. क्योंकि जो रिसोर्सफुल नहीं है वो कचरे की तरह ही, गार्बेज की तरह ट्रीट हो रहा है. इट्स एंडिंग अप. मैक्सिमम क्या है, कोई जला लेता है उसको एंड दैट्स इट. सो दैट्स अबाउट इट. सो हैविंग दैट थॉट हाउ वी कैन डू इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. सो दैट थॉट वाज प्रोवोकिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल. इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग. सो it's not that long ago that I met someone whom I told him, this is my idea. I want to do something related to recycling to make an impact. हम already इस industry में काम कर रहे हैं, and I think being part of the industry, there's a lot we can do if we organize it. So there's not organization बहुत कम है जो formal level पे काम कर रही है, especially in non-polyester या non-pet bottle related market. So we thought के it's a good opportunity to pay back to the society, work on it, and take it as a business model to make it sustainable for its growth as well. सिर्फ ऐसा नहीं you're doing it as a CSR. You want to do it to scale it up, and that's what the idea this year start was. So the whole story behind the green arc is basically वो Noah's Ark से ना linked है. That Noah's Ark saved the world, so Green Ark will save the world from this environmental issues. So we are not focused only on recycling. I'll tell you what products we are working on later on, which cannot be recycled. So every plastic cannot be recycled. On its own it can be, but after some process it's very difficult to recycle. Some things can be recycled only now because इससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, and it's more expensive. And मतलब mass level पे हर चीज़ नहीं हो सकती, even if theoretically you can do it or not. So I met someone, we discussed, and then we came up with the idea of the green arc. And alhamdulillah, it's been 5 months since we started. We are already doing post-industrial waste collection. And we are catering different industries including pharmaceuticals, diaper industry, packaging industry, तो textile industry. इधर से हम जो post industrial से हमने waste collect करना शुरू किया, and post consumer waste के लिए we set up a plant which is going to be operational end of July. So we will be collecting post consumer waste, not directly collecting from houses, but we फील के जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को वी वांट टू इनेबल देम
an access to it. So already काफ़ी सारा waste इसमें से collect नहीं हो रहा जो क्योंकि उसको कोई value नहीं मिल रही या कोई structured नहीं है. So we are planning to do it on a very large scale, and inshallah everything will come up to that level in few months. So there are products which cannot be recycled even if collected. साफ भी हो तो भी नहीं हो सकता. Post industrial is very clean to recycle, but even in that case it's not possible to recycle everything. Usage, a lot of people are using that waste because easily accessible. A collection is not that difficult from industries. So they're burning it, using as a replacement to coal and wood in most of our northern areas जहाँ पे accessibility मुश्किल होती है. It lasts a little longer, but there's a lot of carbon emission to it. So we are basically, our main focus is to develop a useful product out of those non-recyclable materials, which consist of post-consumer and post-industrial waste. Awesome. ठीक है. So you talked about how because you were in the industry, you thought that this is a big gap and you wanted to cater that, but आपको एक वो कौन सा एक ट्रिगर पॉइंट था जो आपको लगा कि अभी शुरू करना है? ये वो तो ना कि एक क्रैक आप कोशिश कर रहे हो तो क्रैक नहीं होती थी. trying something comes up. So we've been, as I said, we've been planning and thinking about it for quite a while, and especially after 2019, pre-COVID international fairs, where everyone, that was the hot topic is sustainability, recycling, sustainability, buzzwords, circular economy. But in Pakistan उस तरफ हम लोग का रुझान है ही नहीं. मतलब we hardly see even the multinationals talking about it. अब आपको शायद कोक के लेबल पे recycle में लिखा हुआ बड़ा हैशटैग के साथ नजर आ रहा है, but few years down the road that's not in the agenda, या आप उस हिसाब से mainstream media पे you won't see. So the awareness. कोक का लेबल आपने प्रिंट किया? No, we did once, but we not at the moment. So basically the awareness is not also there in consumers, and हमारा TGA में we basically have 3 verticals. One is the resins. We are doing recycling. उसका हम first form में we are making recycled resins out of polyethylene and polypropylene. Post industrial we are already doing. Post consumer we will be doing inshallah next month. And the other vertical is TGA initiative, which basically aims to give awareness to end level users, consumers, जिनका हमसे डायरेक्ट शायद कोई लिंक नहीं हो. So the ideology is to educate and provide awareness. So we know that शायद 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में impact नहीं है, but our aim is 10 साल में शायद we can create that impact when आज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इन सब चीज़ों से यूज टू होंगे. उनको पता होगा कि वो तो ढूंढेंगे जब कचरा फेंक रहे होंगे कि यार हम उन बिन में डालें जहाँ पे रिसाइकिल का साइन लगा हुआ. उनको पता है कि प्लास्टिक हमें प्लास्टिक नहीं डालना है. हमारे यहाँ तो वेस्ट कलेक्शन ऑर्गेनाइज नहीं है और वेस्ट डिस्पोजल भी नहीं है. तो वेस्ट कलेक्शन इज समथिंग इमीडिएट इम्पैक्ट हमने in our capacity we can't do it. It's a bigger level thing. The governments have to get really involved to that psyche. But as users, जितनी हमारी reach है उस हिसाब से we're really actively working on providing that awareness that as an end user what you can do. मैं जब घर में नोट करना शुरू किया something very small, you open a tissue roll, अब उसमें पेपर भी है उसमें प्लास्टिक भी है. जब आप उसका टिश्यू रोल चेंज करते हैं तो अंदर का पेपर ख़त्म होने के बाद जो चीज़ रह जाती है दैट्स ऑल्सो रिसाइक्लेबल. जो उसके ऊपर का रैपर है दैट्स ऑल्सो रिसाइक्लेबल. इवन द प्योरेस्ट थिंग इफ यू पुटिंग इट इन द बिन एंड आगे जाके अगर कोई सेग्रीगेशन है ही नहीं, कलेक्शन ही सारी कंबाइन हो रही है, सो द कॉस्ट, द सॉर्टिंग कॉस्ट, एवरीथिंग एड्स बैक. सो जो ऑर्गेनाइज कंट्रीज हैं उनके इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं दैट एक तो कंज्यूमर अवेयर है, वो डाल ही सेग्रीगेट है, फिर कलेक्शन भी उसकी सेग्रीगेट हो रही है, सेग्रीगेट कोई भी हो रही है, और फिर वो जिस डोमेन में रिसाइकिल के लिए जाना उसके लिए हो जा रहा है. So there's a huge gap and I don't think it can be done overnight, but we need to have a start. We need to start people talking about it, and we need to do something as well. And doing something does not mean to do it industrially. As a user, आपका क्या consumer behavior है. And with respect to our association with the industry,
we are advocating to start mentioning कि पैकेजिंग रैपर पे लिखा तो हो कि वो किस चीज़ का है. कंज्यूमर को यही नहीं पता there are different types of plastics. किसी को मतलब even in this room hardly 1 or 2 people would know कि यार कि साइन जो लिखा होता है 1 से लेके 7 तक उसका मतलब क्या है. सो एंड जो पिक कर रहा है कचरा, अगर आप उसकी रिसाइकलिंग चेन बनाएंगे तो वो किस तरह, उसके पास कोई लैब इक्विपमेंट तो नहीं, वो चेक करके बताएगा कि ये कौन सा पॉलीमर है. तो दुनिया भर में रैपर्स पे कोड्स लिखे जाते हैं विद रिसाइकलिंग साइन एंड उसमें मेंशन होता है ये पॉलीप्रोपिलीन है, ये पॉलीएथिलीन है, ये पीईटी है, ये अदर्स है, इफ इट्स इट्स मेंशन अदर्स, ये पेपर है, ये प्लास्टिक का कोई और फॉर्म है, एबीएस है, कोई और चीज़ है. तो उसको लिखा होता है और यू कैन सी एंड टेल कि क्या प्रोडक्ट है, उस हिसाब से सेग्रीगेट हो सकती है चीज़. तो यहाँ पे तो मैनुअल ही सारा काम हो रहा है. तो इवन सीइंग दैट रैपर ही कैन टेल कि यार ये क्या चीज़ है. तो एजुकेशन उस हिसाब से नहीं है. कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, जो अदर्स है इट्स नॉन रिसाइक्लेबल, आई शुड प्रेफर. अगर मेरे पास 2 रैपर सामने हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम, आई वुड जनरली गो फॉर प्रेफरेंस क्या है ये रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट में बना हुआ है, इन दिस प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल्ड, आई कैन यूज इट. एंड क्योंकि रुझान नहीं है, अभी मैं फ्यू मंथ्स ago I was in the UK and Evian की bottle was displaying bigger than what it was displaying as a brand. Evian से बड़ा लिखा हुआ था made out of 100% recycled plastic. यहाँ पे legislation नहीं है. In fact it's not allowed to use in the bottling industry. So there's a lot of misconceptions. क्यों है? Because बहुत सारी unorganized recycling हो रही है जिसमें वो mix भी कर रहा है. Recently I was coming across a video जहाँ पे hospital का waste, injections का waste with contamination, it was being washed, recycled and sold into industries where जहाँ पे plastic के चमचे तक उससे बन रहे थे. तो unfortunately the misuse, हमारे misuse को ख़त्म करने के बजाय उसको totally बैन कर दिया जाता है. रेगुलेट करने के बजाय उसको कहता है कि ये सही नहीं. तो एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन. आपको सही तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा टू एवरीथिंग. एंड आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट. एंड कंज्यूमर की अवेयरनेस इज़ द की. इफ़ यू आर अवेयर दैट वॉट एवर यू आर यूजिंग उसका इम्पैक्ट क्या है, तो यू विल थिंक अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक यू विल स्टॉप यूजिंग इट, बट यू विल थिंक अबाउट इट. एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड थिंग्स एक्चुअली कम इनटू मटेरियलाइजेशन. मैं कोई सवाल पूछने लगता हूँ और आप खुद ही उसी वक्त उसके जवाब दे देते हैं. Sorry, मैं ऐसे में I'm पूछना ही जा रहा था कि what would be like a 1 minute pitch in your mind for, क्योंकि अभी देखें बहुत सारी हमने sophisticated terms में बात तो कर ली और मुझे 90% समझ में आ भी गई. सही फिर आ सकेंगे मगर एक simple words में कि what can be done for the masses, what can the masses do right now. Also, a separate question would be कि how can we actually expand the industry, but that's the second question. पहले तो ये बताएं कि first and foremost question which you asked about what we can do as masses is get awareness about how we can save. अपनी consumption में देखो waste तो जब ही होगा ना जब हम consume करेंगे. First what we can avoid in consumption in terms of कभी हम for example आप 500 ग्राम्स का एक पैकेट लेते हो और 1 kg का एक पैकेट लेते हो और 100 ग्राम्स का एक पैकेट लेते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस. जितनी बड़ी पैकेजिंग होगी, साइज होगा, सर्विंग साइज, उतनी कम उसमें पैकेजिंग यूज़ होगी. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि जितना बड़ा साइज का आप चीज़ लोगे उतनी पैकेजिंग कम यूज़ होगी. एंड अनफॉर्चुनेटली विद रिस्पेक्ट टू आवर इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर स्मॉलर साइजेस. नीड भी बनती जा रही है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन पैकेजिंग कंजम्पशन एज वेल. पहले जो बंदा 5 किलो का आटा लेता था, अब अगर वो 1-1 किलो के 3 पैकेट लेता है या 4 पैकेट लेता है, उसमें नंबर ऑफ पैकेजिंग यूज जो है वो ज़्यादा होती है. और जितना हम राशनिंग छोटे पे जा रहे हैं तो हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है. एंड एज आई सेड द कंजम्पशन इटसेल्फ इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू बिकॉज वी आर ओनली कंज्यूमिंग 4 kg per capita per annum. So that is not that big of an issue. The main thing is उसके बाद हम क्या करें. So coming back to your point, the disposal is where we can immediately make an impact. सबसे पहले तो कचरे को कचरे की जगह पे फेंकें. हम जो
उठा के घरों पे फेंक देते हैं, अपनी दुकानों के बाहर साफ कर रहे होते हैं तो रोड पे डाल देते हैं. That all ends up in landfills, most of it. So first we need to start cleaning in the sense कि हमें waste को waste bins में ही डालना है, and then in at home level, at small level, start segregating it. ये बेसिकली आप रद्दी वाले को सेल भी कर सकते हैं. प्लास्टिक तो बहुत आराम से बॉटल वगैरह सेल हो जाती हैं. हमने अपने घर में प्रैक्टिस ये की है कि जो यूज़ कार्टन होते हैं उसको रख लेते हैं. एक कार्टन में जो है वो मेटल चला जाता है, एक में पेपर चला जाता है, एक में प्लास्टिक की बॉटल चली जाती हैं, एंड स्टाफ सेल इट टू रद्दी पेपर वाला. दिस इज द लीस्ट वी कैन डू. एक सोर्स ऑफ इनकम भी आएगी. जो आप कचरा वैसे फेंक रहे थे उसमें से शायद कुछ 50-100 रुपये, 150-200 रुपये मिल जाए. यू कैन यूज इट हाउ एवर यू वांट. एंड एज आई सेड कि योरसन के बेचे किसको या उसका इवेंचुअली होगा क्या. द थिंग इज कि ठीक है राइट नाउ कलेक्शन उस हिसाब से नहीं है, बट जब वो थैली ही अलग अलग होगी ना, जब वो जो स्कैवेंजर जो निकाल रहा है उसको सिर्फ वो थैली हाथ लगेगी और उसका सारा काम हो जाएगा. उसकी इट्स नॉट लाइक यू आर बेसिकली एडिंग वैल्यू डायरेक्टली टू इट, बट जो वो रिसोर्स है उसके लिए ईजी हो जाएगा. यू विल मेक इट ईजी फॉर समवन. अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इट्स ऑल एंडिंग अप इन द सेम प्लेस. ये जो हमारा जो मोहल्ले के जो कूड़ेदान होते हैं उसी में सब कुछ जाता है, even if you are segregating at your home. But once more people start doing it, it will add more value to that thing because साफ सुथरा होगा. First thing is साफ सुथरा होगा. अभी कंटामिनेट हो जाता है. आपके घर के आपका फूड वेस्ट भी उसी में जा रहा है. तो जितनी कंटामिनेशन होगी उतनी सेग्रीगेशन डिफिकल्ट भी हो जाएगी, और सेग्रीगेट हो भी गया देन इट हैज़ मोर कॉस्ट टू इट. वॉशिंग इज अ बिग कॉस्ट. सो दैट्स हाउ स्मॉल कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है. So that's small steps we can take, and as a conscience you can choose to go for products. अभी आप शॉपिंग करने जाते हो, यहाँ पे तो काफ़ी सारी जगहों पे वोवन बैग्स अवेलेबल हैं. That's also plastic. हमारे यहाँ क्लॉथ परसेप्शन की जाती है that's also plastic, but that has more reusability in it. आप एक नॉर्मल जो LDP की थैली होती है वो लोग फेंक भी देते हैं, हवा में उड़ भी जाती है. रीयूजेबिलिटी उसकी बहुत कम रहती है. सो यूज़ सच बैग्स विच कैन बी रीयूज. अब जूट के बैग्स भी आ रहे हैं. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू प्रोवाइड सम प्रोडक्ट्स इन द नियर फ्यूचर टू अवॉइड सिंगल यूज आइटम्स. सो सिंपल थिंग्स हैं. लोग पेपर स्ट्रॉस यूज़ कर रहे हैं, बट दैट ऑल्सो हैज़ रिसाइकलिंग इन्वॉल्व विद. पीपल आर कन्वर्टिंग टू मेटल स्ट्रॉस. बट हर चीज़ के चैलेंजेस भी है. द क्लीनिंग ऑफ मेटल स्ट्रॉज, द स्टेरिलाइजेशन. सो द सोर्स ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड इवन इफ इट्स अ प्लास्टिक स्ट्रॉ यू डोंट नो कि बनी हुई किस चीज़ से. या आप जो अभी बिरयानी सेंटर का चमचा उठा रहे हो, सॉरी फॉर टेकिंग एनी ब्रांड्स नेम, बट एनी फूड प्रोडक्ट यू आर गोइंग एंड टेकिंग, जो चमचा आपको ये नहीं पता कि बना हुआ किस चीज़ का है, उसकी सोर्स सही है भी या नहीं. सो इन दैट एस्पेक्ट also we are providing some sort of materials to show care we are certified, and providing those material and ensuring they are ये सही source से बने हुए, सही process से बने हुए, contamination उसकी नहीं है. and so awareness होना ज़रूरी है. अगर वो कंज्यूमर पूछेगा ही नहीं कि यार उस प्रोडक्ट का है क्या है, वो सोच ही नहीं रखेगा. so that I think is the main area. Awareness is the key. Okay, it is off the topic. So you come from a business family. I come from a business family. हम लोग जब भी कहीं गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई शूज़ भी देखते हैं ना, मिट्टी भी देखते हैं, कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यार इसमें यहाँ ऐसे कुछ करके पैसे कमा सकते हैं, और इसमें यहाँ लोगों को हेल्प भी होगी, यहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी. वी हैव अ वेरी सैडली ग्लोबली रिसेशन तो आई भी है, लेकिन यहाँ भी और बुरे हालात हैं. लेकिन हम निकलते हैं तो बिजनेस इतना दिखता है कि अपॉर्चुनिटी इतनी है. अब बाहर से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप से यहाँ पे हैं भी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, मगर हम लोग क्यों नहीं देख पाते. एंड व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली केटर लाइक सॉल्व दैट इशू कि यहाँ बिजनेस भी है, यहाँ पे पैसा भी है, यहाँ सब कुछ है, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, उस रेसिपी की बनाने वाला क्यों. Unfortunately in our society, if you open the TV, there's so much negativity. हम लोग अपॉर्चुनिटी जो चैलेंजेस हैं उसको अपॉर्चुनिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं. एज अ माइंडसेट वी आर सो इनगल्फ्ड इन पेसिमिज्म कि हमें चीज़ें नहीं दिखती. बट
right there, as you said, आप भाग जाए, talk with right people, right ideas, and you will see यार हर चीज़ में opportunity है. So there is no lack of opportunity. माशाल्लाह the population जहाँ पे हमें सबसे बड़ा challenge लगता है वो ही सबसे बड़ा opportunity है. So there's everything related to consumption. So जितनी population है उतनी consumption भी उस हवाले से. So there's opportunity in everything, and recycling I think will eventually be on a very mass level, on an organized level. Startups, tech में बहुत work कर रहे हैं, and this is one thing which will be a future as well, because that's the top of the town globally. If you go, everyone will be talking about. Everywhere you go, every product you will see will have something mentioned to it. So we are a third world country. Normally things take time as a conceptually, हम थोड़ा accept करने में भी थोड़ा time लगता है, but we will be there inshallah. So much like मैं अभी I was in Europe for a month. मैं इतने लोगों से मिला हूँ, मैं बुरा लगता था कि मैं किसी का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मुश्किल था. But जिससे मिलो, जिसको पाकिस्तान के बारे में बताओ, उसका बस नहीं चलता था कि अगली फ्लाइट पाकिस्तान आ रहा है. क्यों? क्योंकि इतने लोग, इतने मोबाइल डिवाइसेस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग. स्टिल बहुत सी चीज़ें टूटी भी हैं, बट वी हैव फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. टोक्यो जाते हैं, वहाँ पे छोटे रोड्स होते हैं यहाँ से, तो सो मच है. मगर अगेन तो माइंडसेट वाली बात होती है, कहाँ पे बात होती है कि हम लोग सोच ही नहीं पाते. नेगेटिविटी टीवी पे तो है, लेकिन अब तो टीवी लोग देखते भी नहीं. But it's general. People are so frustrated. Everyone is, मतलब जिसका जहाँ दिल करता है वो आपको पॉजिटिव होती है ना, वाइब आती है. आप बंदे से बात करो, जनरल पब्लिक यू विल टॉक, स्पेशली इन द सिटीज देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन. यही चीज़ आप लेट्स सपोज गो टू एनी नॉर्दर्न एरियाज, यू टॉक टू पीपल, यू विल फील हैप्पी. इवन यू डोंट नो द पर्सन, दे विल लुक एट यू एंड दे विल स्माइल. यहाँ पे वो जनरल एक सबको एक परेशानी है. सो रिसोर्सेज लोगों के पास नहीं हैं, they have economic pressure, so that everything मुझे लगता है कि ना cloud बन गया है with negativity, which is not nice, and I think that's not the real case. We need more positivity, more people talking about opportunity, hope. People are also hopeless, so कहते हैं ना उम्मीदी तो कुफर है, तो हमें we need to be more positive, and as a nation we have to think positively. हम लोग I listen to you, the energy you have. It कुछ भी नहीं, even if it's not related to any specific topic, कुछ भी हो, but that body language that gives energy, that gives spark. तो बंदा सोचता भी है कि हाँ यार, that little things count. So I think there's a lot of potential. वो तराशने वाली बात है कि किस तरीके से उसको तराशा जाए. तो coming back to your industry, you are so plastic recycling. There's so much happening. What can a normal बंदा do, not as a consumer, but businesses यहाँ पे क्या क्या scopes हैं? What are the statistics that actually would trigger someone to come into this industry as well? See, there are a lot of recycling opportunities on different levels. Starting off with, like, if I talk about downstream, comes with the collection. Especially in Karachi, there is a lot of gap in waste collection. Organized government level पे तो है. If you go to Lahore, there are a few setups that are collecting door to door, paying to the consumer. आप पे करके उसको हाथ के हाथ पे कर रहे. तो उसमें काफ़ी एक network, ठीक है, you have need to have a logistic network, but that is one side which I see as a really good opportunity in waste collection. You can start off with communities, buildings. Buildings is the easiest because आपको एक बहुत छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाता है. Then societies हो गई, government की कुछ ऐसे societies हैं, या schools हो गए, network of schools हो गए. That is the opportunity where you can actually engage. You can pay. अभी तो हम कचरा उठाने के लिए पैसा देते हैं. आप कचरा उठाने के लिए आप कंज्यूमर को पैसा देंगे. अभी कंज्यूमर पैसा देता है, मैं मेरे से कचरा ले लो. So that is the reverse psychology, because we say na trash is cash. Actually, you have there's a guy in Rawalpindi now has 12 or 20 centers, which have many benefits data. He pays annually 1 crore rupees tax, sirf. And
एंड उनके ऑपरेशंस क्या है, वो हाउसिंग कॉलोनी से होती है, उसके अंदर एक छोटा सा सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे वो कचरा लोगों से कलेक्ट करते हैं, उनकी छोटा सा लोडर वैन होती है, कलेक्ट करके आ जाती है, उनको उल्टा पैसे देते हैं, प्लास्टिक बैग्स देते हैं या प्लास्टिक नहीं तो कुछ और बैग्स देते हैं कि वो कचरा उनको मिल सके, 22 कैटेगरीज में सेपरेट करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। So that's a very कॉम्पोस्ट वो खाने पीने की चीज़ें कॉम्पोस्ट बना रहे हैं, चावल होता है तो उससे मुर्गियाँ पाली हुई, अंडे बेच रहे हैं उसी सोसाइटी में, शीशा अलग, डाइपर्स अलग बेचते हैं वो, मतलब बहुत हर जो कुछ है सब कुछ इज लाइक गोल्ड फॉर समवन एल्स। So, coming downstream से आप थोड़ा upstream आ जाओ. One is the collection. Then उस collection से ज़रूरी नहीं you're directly recycling yourself. You can be a vendor that is यहाँ इस पूरे ecosystem में there has to be multiple stages. It's not like everyone can do everything, and you can't. So you have to specialize in certain areas. Collection is a very rewarding area, but you need that focus, and there are a lot of challenges to it as well. There's a lot of mafia. सबसे बड़ा कलेक्शन में इशू ये है. अच्छा, एक और मजे की चीज़ ये है कि हम लोग रोडों पे देखते हैं अक्सर कचरा पड़ा हुआ होता है, ढेर लगी हुई होती है, बट फ्यू डेज लेटर वो ज़ीरो हो जाता है, फिर जमा होना शुरू हो जाता है. दैट बेसिकली दैट वेस्ट इज बीइंग कलेक्टेड, बट दे आर वेटिंग फॉर द लोड ऑफ द कार टू बी फुलफिल्ड. सो एक थोड़ी पुरानी बात है, हम मोहम्मद अली पे चाय पी रहे थे, तो एक बच्चा जो है वो कचरा कलेक्ट कर रहा था और अपने साइकिल के साथ जंबो बैग में डाल रहा था. तो मेरे साथ जो थे मैंने उससे जाके पूछा ऐसी कि तुम क्या करते हो, इसका कितने का बिकता है. बात खत्म हो गई. थोड़ी देर बाद हम जाने लगे तो वो लड़का जिसने पूछा था वो गाड़ी में बैठने लगा, उसके पास एक बाइक आके रुकी, तो उसको पूछता था मुझसे क्या बात कर रहे थे. तो दे ऑल्सो हैव अ लेवल ऑफ हायरार्की जो उनको मॉनिटर भी करनी होती है. सो इट्स नॉट दैट ईजी दैट यू कैन गो ओपन एंड कलेक्ट इट, बट दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली. हाउसिंग स्कीम्स, स्कूल्स, ऑर्गेनाइज एरिया जैसा कि मॉल्स हो गए, इन सब जगहों पे हम कर सकते हैं. रिवर्स वेंडिंग मशीन्स इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. यहाँ पे उस हिसाब से ओनली पेप्सी हैज़ डन इट इन आई थिंक समवेयर इन पंजाब, where you basically insert an empty bottle and they give you a reward. यूरोप में तो होता है। हाँ, यूरोप में तो बहुत होता है. यूरोप में एक केस स्टडी थी, जर्मनी में एक टाउन में होमलेसनेस ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो हर कचरा डालने पे बॉटल का था, वो हर बॉटल डालने पे उसको वो कुछ सेंस दे रहा था. अभी मैं जर्मनी में ही था एक्चुअली. मैं कुछ भी बॉटल होती है फेंकने लगता था, कोई आदमी से ले जाता था. कोई भी होमलेस बंदा है, कोई घूम रहा है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग जर्मनी में होती है. 70% ऑफ वेस्ट इन जर्मनी इज रिसाइकल्ड एंड 70% इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. क्या ऐसा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट होगा जो डेटा में हम ले सकते हैं कि बिजनेस में अगर आना चाह रहे हैं तो उसको Basically, the issue in Pakistan with respect to this industry is there is no organized data. अभी हम जब अपनी रिसर्च भी कर रहे थे तो सिमिलर कंटेंट विद डिफरेंट मतलब सिमिलर पॉइंट जो हम नोट करना चाह रहे थे ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स वर हैविंग डिफरेंट फिगर्स. गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूएस का डेटा पाकिस्तान के बारे में कुछ कह रहा है, पाकिस्तान का डेटा कुछ कह रहा है, लोकल डेटा कुछ कह रहा है. तो हमारे पास क्योंकि ये सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लैकिंग इन डेटा. विद रिस्पेक्ट टू दैट, पाकिस्तान डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस इज अ वेरी बिग रिसाइकलिंग नेशन. अब हमें लगता नहीं है इन जनरल, बट अगर आप इफ़ यू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री स्पेशली इन पंजाब, गुजरांवाला, ऑल द स्मॉलर सिटीज़ हैव वेरी मास लेवल ऑफ रिसाइकलिंग. लाइक इस हॉल के जितने में सेटअप लगा है एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. बट व्हाट आई फील हमारे एज मोर ऑर्गेनाइज्ड पीपल विल कम इन, द क्वालिटी ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रिसाइकिल करके अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं करते सो इट्स बेसिकली यू डाउनग्रेडिंग दैट मटेरियल्स पोटेंशियल एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वैल्यू तो यूज़ कर ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू, बट एक्चुअली मटेरियल वैल्यू भी वो लूज कर रहा है. So unless and until we have organized good setups, they can at least maintain the value of the product. And there's a lot of opportunity. Although there's a big number of recycling companies in Pakistan, but organized उसमें से very limited. You can count on your fingers. Me and Talha actually
we went to a recycling facility around Multan and कुछ बहुत अच्छी थी, हमारी भी recycling facility है pellets की, मगर उसमें जब मैं गया था तो मुझे बाहर आकर समझो उल्टी हो गई क्योंकि वो प्लास्टिक ही जला के प्लास्टिक को पिघला रहे थे और फिर वो काला काला प्लास्टिक उस तरह फैला रहा था। देखो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग फॉर सर्टिफिकेशन एज वेल। सो सिर्फ रिसाइकिल कर बोलना कि ये चीज़ रिसाइकिल प्रोडक्ट की बनी हुई है इज नॉट इनफ, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, आपकी कार्बन एमिशंस क्या है, आप सस्टेनेबल वे में कर भी रहे हो या नहीं, सो दैट इज़ एन इशू। हम काफ़ी सारी जगहों पे हम समझते हैं कि plastic is not better and we can replace with paper, but paper has its own water consumption, its own plantation के issues हैं, deforestation एक global issue, so it's not all negativity that's associated with plastic, it's how we use it, how we dispose it, if you're reusing or not. So abhi there's a project we are working on which is focused solely on those plastic materials which cannot be recycled. As I mentioned initially, all plastic can be recycled. I want to see them. So I can show you. She's going to be the So first I will show you made out of recycled products, which is purely industrial products. Wo bhi dikhayenge. So these are not our products, but these are made out of pellets, resins which we are making. So these are household products made out of 100% recycled plastic. तो यही चीज़ सर्टिफाइड अगर आप इसको Amazon में भी डालोगे ना, इट विल हैव अ वैल्यू, इट्स क्लेम। सारे Amazon वालों प्लीज, हाँ, Amazon वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। वंस वेरी सून विल बी GRS सर्टिफाइड, सो GRS सर्टिफाइड हैंगर्स की बहुत बड़ी मार्केट है एक्सपोर्ट की और टेक्सटाइल। GRS is global recycling system, so there are a lot of opportunity in for export for hangers only. In itself, this is a very big industry. So you make product out of 100% recycled materials, certified recycled product. As I said, and how it's recycled is also very important, and you can sell it. It's certified. You can certify it. So we'll be certified with our agents. So this is same. This is a regular hanger. These are regular household items. प्याले वगैरह बनेंगे. So we provide basically injection grade, film grade, polyethylene, polypropylene. So this is very interesting product. This is a marble texture coaster. You can make a table out of it. You can make anything you want to make out of it, but this is made out of 100% recycled product. They're made out of recycled items, and that's where the interest comes in is things like this. This is a brick made out of non-recycled product, MLPs, multi-layered plastic. No cement, only MLPs and sand. And this is also a roofing sheet made out of MLPs. It has aluminium laminated to it, and it is very sturdy. इसी भी prototypes पे है. Inshallah next year we'll be launching TGA build, which will have these products on it. So this product that you can see there, this will बिल्कुल भी segregate नहीं होगा, इसमें तो caps भी हैं. So अभी मैं कट कर रहा था तो उसमें bottle कट करना, and these are something. So right now we are working on these products. Apart from making recycled pellets, this is one of the ventures which we are working on, making building materials and awareness. TGA initiative का जो पूरा focus है वो awareness पे है. The whole team is assigned to create awareness, and inshallah very soon we will be launching programs with different school networks and start educating बच्चे from younger age. And उनके लिए activities हैं where they sort of play-based learning होगी to learn about recycling, and थोड़ा सा उनको reward system होगा. So that's the ideology. Then going on with यहाँ के जो public areas हैं, वहाँ पे reverse vending machines in parks and malls, so people get more awareness about it. That's also a really good business model. That's not something where we aim to make money out of it. That's something for awareness for us, but it's a really good business opportunity as well for someone whoever wants to do it. Well, I think that includes a lot of things. Thank you so much for coming. Thank you
for your time. And I hope कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, they do get a lot of out of it. Because again, it's a very profitable industry to be in. Habib bhai is there to help out. Yes, and any questions that I can answer. And yeah, definitely add him on LinkedIn, Facebook, or go on and then Bye. Thank you so much. Thank you very much.